There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. It's been a crazy news week, starting with a stampede at the New Delhi railway station. This is the deadliest tragedy at a train station after the 2017 Elephant Stone stampede in Mumbai. At around 9:30 p.m. on Saturday, we at News Laundry got word that something terrible had happened at the NDLS station. Our reporter Anmol Preetham rushed to the spot and sent us this update at midnight. From about midnight till 9 a.m. in the morning, Anmol stayed on the ground and got us hourly updates on what was happening. He spoke to relatives of the victims, eyewitnesses, but there was something interesting about Anmol's report on the ground that others did not show. इस वक्त मैं दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उससे जो लोग घायल हुए या जिनकी मौतें हुई हैं उन सारे लोगों को यहाँ पर लेके आया गया है। अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 15 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो अब तक हमने नहीं देखा वो ये है कि इस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं या जो भी जिनके परिजन घायल हैं, जो लोग घायलों से मिलने जा रहे हैं या मृतकों की पहचान करने जा रहे हैं, उन लोगों को अलग गेट से घुसाया जा रहा है और एक तरह से मीडिया से उनसे दूर रखा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था ताकि मीडिया अंदर ना जा सके, अंदर के हालात मीडिया लोगों को ना दिखा सके। How predictable. यहाँ पर मीडिया का एक्सेस आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी लगाकर रोक दिया गया है। हम लोग इस गेट से या इस सिक्योरिटी के बाद हम लोग नहीं जा सकते। ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है। जब भी कोई हादसा होता है तो सिचुएशन को कंट्रोल करने से पहले मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए ये सोचा जाता है। The next morning, News Laundry dug deeper and found something unusual. In unusual move, Railways gives rupees 1.99 crore total in cash to victims of Delhi stampede. The families of the deceased were handed rupees 10 lakh in cash on the spot. By late night and into the early morning, the railways had distributed nearly 2 crore in compensation to victims and their families. Now, you could say the railways acted swiftly to provide relief without any bureaucratic delays. No long-drawn paperwork, no waiting, just cash in hand. Very efficient, right? Look closer. 2 days after our story, major newspapers like the Hindustan Times and Indian Express picked this little detail up. And suddenly, the cracks in this instant relief started showing. I'm unsure whether I can go to the bank and deposit this money. I feel it's unsafe to keep so much cash at home, Said Sanjay Kumar, who lost his sister Pinky Devi in the stampede that killed 18 people. Anubhav, Sanjay and Vipin say it was strange that the compensatory money was given in cash. However, all three echoed that none of them had the mental capacity to question anything when they were handed the wads of cash. Everything feels strange. They asked for our Aadhaar cards for verification and handed us the cash. I didn't care then. I just wanted my sister's body out of the morgue. The relatives who got the money as compensation felt the whole thing was done to close the matter as soon as possible. It almost seemed like the government's priority was to close the matter as quickly. Paisa lo or niklo. And sadly, that is the truth of governance today. It isn't about fixing a problem, it's about managing the headlines. The Railways Ministry has directed X, formerly Twitter, to remove 285 social media links containing videos of casualties from the February 15th New Delhi railway station stampede. This is one of its first major content enforcement actions. The Modi government has perfected the art of headline management. साथ देने के लिए मीडिया खुद हाजिर है. राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की बैटरी चाइनीज है. A stampede at a major railway station in the capital of India, no less, should have led to discussions about overcrowding, infrastructure failures, and government accountability. Instead, very typically, we have Navika accusing the Congress of what else but anti-national activities yet again. क्या सैम पित्रोदा की चीन भक्ति से राहुल गांधी को शक्ति मिलती है? और ये फॉर्मूला इतना फालतू हो गया है। कांग्रेस में सैम पिट्रोडा या मनीशंकर अय्यर तो हैं ही, वो कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे कभी ना कभी। जो भी बोलेंगे उसको उठा लो, बवाल बना दो और असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट कर दो।
भारत का दुश्मन है कौन? तो भारत का दुश्मन है कौन? भारत का दुश्मन कौन है? टेक अ वाइल्ड गेस। कुंभ के दौरान ये दूसरा बड़ा हादसा है। वी स्टिल डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली डाइड इन द प्रयागराज स्टैम्पीड एंड विद इन वीक्स वी हैड न्यूज ऑफ डेथ इन दिल्ली एंड विद इन वीक ऑफ दैट वी हैड न्यूज दैट द वाटर एट कुंभ वाज अनफिट फॉर बेदिंग। ये कोई एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, अर्बन नक्सल नहीं बोल रहा है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। Mahakumbh waters unsafe for bathing. A report finds fecal bacteria 13 times over safe limit. Fecal coliform is basically bacteria found in poop. And during the Mahakumbh Mela, the levels of this bacteria in the water was just off the charts. In simple terms, the water was so contaminated that if you took a sip, it would be equal to taking a sip from a sewage. Now, I know this may upset a lot of people because Ganga is sacred to us and the Kumbh has deep religious significance for Hindus. But shouldn't a government that claims to be the protector of Hindus and Hindutva, at least they should ensure that Hindus can celebrate their festivals in a clean, safe environment. If they truly cared, wouldn't their priority be making sure devotees are dipping into clean water? संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। चलो भाई योगी जी, आप ही एक डेमो दे दो आचमन करते हुए, कहीं आपका भी हाल वीरेंद्र जैसा ना हो जाए। $7,000 crore, 7,000 crore, that was the amount of money spent on Kumbh. People died in stampede, people complained that only VIPs can enjoy good arrangements, there's nothing for Aam Aadmi, the water was not fit for anyone to bathe in. Will anyone finally ask, where on earth did that 7,000 crore go? On what was it spent? सनातन गर्व महाकुंभ पर्व तथा सामाजिक समता के त्योहार के रूप में मेले का उद्घोष करते होर्डिंग्स, सरकारी स्कीम तथा डबल इंजन सरकार का बखान करते कुछ अन्य होर्डिंग्स जिनमें मुफ्त राशन से लेकर चुस्त कानून व्यवस्था तक और रोजगार संबंधित अवसर से लेकर पेंशन तक की बात की गई है। That was Akanksha Kumar's documentary from the Kumbh that we released this week. It's a 40-minute documentary. It's just the part 1. I urge you to watch it. All of Kumbh area is adorned by big, flashy Yogi Modi hoardings promoting good governance of double engine ki sarkar. 7,000 crore rupee, 7,000 crore spent on Kumbh. How much of it was spent decorating the entire city with these two faces? And what impact did that have on people? What's some more of this special documentary we released this week? हमको बहुत अच्छा है, मोदी जी तो भाई है, बहुत लाभ दिया, इंदिरा आवास दिया, किसान वाला पैसा देता है, वृद्धा देता है, हर महीना 1% हिंदू राष्ट्र में तो इसमें तो लगना ही पड़ेगा सब जी। अगर राष्ट्र को ऊपर ले जाना है तो इनका तो साथ देना ही पड़ेगा हमने, मोदी योगी का। अगर ये इनका साथ नहीं देगा तो हम अपने भविष्य को भी खो रहे हैं, हमारे बच्चे भी बिल्कुल बेकार ही हो जाएंगे। मार तो हरियाणा में तो न्यू कहना है कि मौज कर रखी मोदी, उसने योगी ने आपकी पेंशन मिले और हमें क्या चाहूँ तो पैसा बरतने को चार बढ़िया काम करे लग रहे हैं वे। आगे भी वोट उन्हीं की देंगे, हम तो उनकी देते आ रहे हैं बहुत दिन तक वोट। मोदी सरकार का नाम नमेशा बढ़े, अगर पूज बढ़े, जीते तब। बाकी जो मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, उनसे आपको लगता है इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं ध्यान हटा देते हैं कुछ समय के लिए? नहीं हटाना चाहिए, लगाए रहना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है ऐसे सनातन धर्म। This is where we are. Leaders who were once held accountable for disasters can now just brush off criticism, and we've been conditioned to accept it. Rail accidents, no resignation. Bridge collapses, no accountability. Spending our taxpayers' money on self-promotion. Wah Modi ji wah, wah Yogi ji wah. The bigger problem? When the media stops questioning power, people stop questioning it too. We forget that the government is using our money, our tax money,
whether it's to organize the Kumbh or fund welfare schemes like PM Awas Yojana. But instead of acknowledging that it's their duty to serve the public with our money, they slap their faces all over advertisements as if we should be grateful for their generosity. Public servants have turned into feudal lords and citizens into obedient subjects. If this blind devotion to leaders over accountability bothers you, if you still believe that questions matter in a democracy, then you need to do a little more than just sit and complain. You see, at News Laundry, we're not here to manage headlines, spin narratives, or scream in high pitch. You just don't need to be a Yogi supporter or a Modi supporter to say I am for Kumbh. We are here to call out the actual nonsense, demand accountability from people in power. We aren't here to find new enemies to beat every night. We are here to bring you ground reports. This week alone, a small team like News Laundry, we managed to bring you stories on Delhi's stampede, a documentary from the Kumbh, and exclusive reports on environment, on business, and of course water at Kumbh. But here's the thing, we can only do this with your support. There's a reason why week after week we can do investigations and bring you exclusive scoops on government mismanagement. Because we aren't taking any ad money. So we aren't reliant on government and we can question them. But भाई bills तो हमें भी देने होते हैं. Salaries मानो या ना मानो हमें भी देनी होती है. TV न्यूसेंस का पूरा शो हम ad free कर रहे हैं almost 6 साल से. We're taking no ads in this season of content creation and making lots of money out of YouTube. So if you want us to continue to do this show and you want to support News Laundry and especially the kind of journalism we do, you have to step in and support us. Otherwise, honestly, we'll just have to shut shop. I know. For some of you, our subscription is expensive. Many of you are students or you've just gotten jobs and you've just started working, so you can't spend a lot of money on subscriptions. But we've heard your complaints. We've got you a special News Laundry subscription at just ₹99. Believe me, if all of you who watch this show, some 3 to 5 lakh people every week, if all of you watching even support us with 99 rupees a month, it'll make a huge difference to us, it'll make a huge difference to our journalism, and it'll make a huge difference to democracy in India. With your support, we can continue to hold power to account. We can continue to hold media to account. Media का क्या role है democracy में? That is what we want to stress every week on TV Nuisance. So if you guys like what I do, if you like what my whole team at TV Nuisance does, then please think of supporting us. Just ₹99 a month and you can actually make a difference. Now, since the flavor of the month is Ashleel, Gandhi, Bhaddi, roast type shows, I'm going to show you News Laundry's spin on roadies type Gali Galoj wala show. This little chunk of what I'm going to show you is from 2020 का Nuisance का एक episode. कोरोना काल चल रहा था तब और न्यूज़ एंकर्स एज यूजुअल लगे हुए थे हमें डिस्ट्रैक्ट करने में असली मुद्दों से हमारा ध्यान भटका के पूरा नेशन और एटलीस्ट नेशन के पूरे न्यूज़ एंकर्स वर टॉकिंग अबाउट रिया एंड सुशांत. आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा. आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड कह रहे थे. Yes, this guy now is a BJP spokesperson. What a promotion, Sarji. Anyway, since it took talent like this to be a reporter in a newsroom, Arnab's newsroom, here's presenting our special talent hunt show to hire a reporter for news channels. What does it take to be a news reporter in a news channel? Todi banega tu! Enjoy. MTV Roadies, that is so 2005. Welcome to 2020, the wildest and the filthiest shitfest for losers. Our TV Toadies. टोडी बनेगा? टोडी बनने आया तू यहाँ पे? You know what it takes to be a bloody toady? What? बता. क्या मुक्या हिला रहा है तू? रिपोर्टिंग करेगा टोडी की तरह रिपोर्टिंग. अंडरस्टैंड. एंकर बनेगा? बन सकता है एंकर? बन सकता है. चने बेच चने.
करारे ले, चैनल करारे। Big news coming in, big news coming in. SSR है, हथरस है। Big news coming in, big news coming in. लिब्रांडो है, शाहीन बाग है। Big news coming in, big news coming in. चने करारे ले, बेच। ये क्या जादू कर रहा है क्या? हैं? जादू चल रहा है यहाँ पे? He can't sell chanas. He has no future as an anchor. I mean, he's unable to sell chanas. I don't think he has a future. ये टोडी बन ही नहीं सकता यार. मुंह देखो इसका. I need to check his spine, right? Check it. ये हड्डी है तेरी. ये हड्डी है. ये क्या है सीधा? Bend. Real toadies bend. When told to bend, you should crawl. नीचे जा. I don't think he can bend over backwards. नहीं कर पा रहा है ये. He needs to bend over backwards. असली toadies ऐसे होते हैं. ऐसे. झुकेगा कैसे ये? कैसे झुकेगा? ऑर्डर दूंगा तो झुकेगा कैसे तू? He can't do it. He can't do it. He can't do it. He can't do it. I'm stunned. Very bad. Very bad. Stunned. बोलता कैसे तू? सीधा बोलता है कि how do you talk? कैसे बोलता है तू? Normally बोलता है नहीं होता है. ऐसे बोलता है ऐसे. What is the day today? Friday. What is Friday? You say आज Friday है और आपने Monday को क्यों नहीं पूछा? Monday है. Friday क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे बोल इनको देख. जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे. तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे. One last chance. हंस क्यों रहे? One last chance. At least say something obnoxious. Say something bigoted or sexist or misogynist. Say it. कुछ नहीं बोल रहा. कुछ बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हिंदू मुस्लिम पे कुछ बोल दे. बोल. करारे ले चैनल करारे ले. गाली दूं मैं इसको? सुधीर चौधरी. गाली दूं मैं? गाली दे रहा हूं मैं. वो पैनलिस्ट का ऑडिशन है. वो अलग है. अच्छा सुनाई दे क्या होगा? Okay, now last chance. We will check your footwork. Let's see if he has the footwork of a toady. Can you do like this? Hello, I'm reporting. Come on, from here. Don't bump into stuff. Light is gone. Here, I'm reporting. Where are you reporting from? Who knows? Who knows where you are reporting from? Come on. Can you do it? Can you be a toady? Helicopter shot. Helicopter shot. See. Oh my God. ये गिर चुके हैं. A real toady falls. Yes, breaking news. Breaking news. He doesn't have it. I don't think he has it. हटाओ इसको यार. टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा. हटाओ. He doesn't have it. Just get out. Get out, say. If you want to be a fucking toady, this is what you got to do. Watch this. Watch this video carefully and then come here and try and be a toady. Watch it. मंगेश जी हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे वो खौफनाक किस्सा मंगेश हुआ था. मंगेश जी हाँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ. ये अब जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे वो खौफनाक किस्सा हुआ था. मंगेश आप देख पा रहे हैं? मंगेश आप प्रॉपर्ली देखिए. जी हाँ मंगेश जी हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस अब यहाँ पे नहीं है, बट पुलिस जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मंगेश मैं आपको खबर दे दूंगा. कैमरामैन के साथ करण प्रेस. Excellent, Mangesh. Excellent. You're born to be a toady in our channel. सर, मेरा नाम मंगेश नहीं है, मंगेश एंकर का नाम था. Amazing footwork. Amazing. थैंक यू सर. यहाँ बॉम्बे में फुटवर्क का भंडारी लगा है. Got it, sir. Got it. Okay, toady, ये तेरा कैमरामैन पैकेज में आएगा ना? कितने का है? यस सर, 8 रुपीज पर किलोमीटर. नाइट चार्ज लगेगा और सरचार्ज एक्स्ट्रा. हाँ. You are born to be a toady. I'm stunned. You are born to be a toady. Stunned. So stunned. That's all the nuisance we have for you this week. Need I remind you guys, please subscribe to News Laundry. Subscribe because that keeps our show going. Otherwise, it'll be very difficult for me to continue to do this show. And I'll have to just give you rewind from previous episodes. If you want fresh episodes, newer stuff, then please support us. I'll see you next week, hopefully with a new show, depending on how much you guys contribute.